नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मगड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं राजा मुनीब जी, हु इज अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड इज अ कॉलमनिस्ट इन लॉट ऑफ क्या बोलते हैं डेली नेशनल्स और न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। अचानक से सारा एडम सीआईए एजेंट को पता नहीं क्या भूत चढ़ा चढ़ा और कहती है कि चलो आज हम चल के इंटरव्यू दे आते हैं। उन्होंने इंटरव्यू ऐसे आपको लगता है ऐसे उठ कर दिया, मुंह धोई उठी और उन्होंने कहा कि आज अचानक से आई गेट अ फील टू गिव एन इंटरव्यू। दीज थिंग्स आर डू नॉट हैपन इन ऑल ऑफ अ सडन। दे ऑलवेज हैव एन एजेंडा, देयर इज ऑलवेज अ बिगर गेम विच इज एट प्ले। पीछे में कुछ और चल रहा होता है और ये इंटरव्यूज का सहारा लिया जाता है, या मैं बोलूंगी एट्रोसिटी लिटरेचर का सहारा लिया जाता है। बहुत सारी चीजों का सहारा लिया जाता है इन ऑर्डर टू रीच अ गोल। ये बिल्डअप किया जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, धीरे धीरे धीरे, जैसे ना ऐड करते जाते हैं कुछ इस तरीके से। और मैं और राजा जी इसी चीज पे बात कर रहे थे मुनीब जी, कि आफ्टर ऑल एंड गेम क्या है? व्हाई डिड सारा एडम गिव दिस इंटरव्यू एंड व्हाट इज द गेम प्लान? हाउ इज मोदी अ पार्ट ऑफ दिस बिगर गेम? मुनीब जी, a very warm welcome on the show. I think we'll start with Thank Sara. you. Namaste. स्टार्ट विद सारा एडम की कौन सी चिड़िया का नाम है जी? Basically, एक CIA agent है. She's a in intelligence partner. इसको rogue कहते हैं because she has come out and trying to spill beans. So actually अगर आप देखेंगे सारा एडम्स का सेकंड इंटरव्यू है. उसने पहला भी किया था and somewhere अगर आप देखेंगे कि she was trying to address her own crowd in a sense ki people sitting in US, but and she made claims and that podcaster also made claims that they got censored, and then she came out because they wanted more visibility to what she was trying to build up. She holds a lot of grudge, and she openly admits ki I'm biased towards declaring Al Qaeda as the biggest terror organization because of Benghazi attacks. तो कहीं ना कहीं उसका एक पर्सनल एजेंडा है which she wants to settle when it comes to the US consulate attack in Benghazi. And uska she has found she's just hitting everybody left, right, and center, hoping to generate response and get triggered and this thing to go viral. So that is what she has basically done. But then all along the way, what she has done is she has made some very outrageous claims. She has talked some really incoherent stuff. She has tried to whitewash other stuff, like a country like Pakistan. She has tried to whitewash that. Oh, when she says ki everybody looks at Pakistan as a terrorist country, but when I was in Pakistan, I was, they helped us a lot. We arrested a lot of people and all that, but the US never had a game plan for the arrested people, and then Pakistanis had to let them go. So that tells you that how much of disappointment she has with her own administration, number one, and she's trying to settle scores when it comes to their own agencies because she's going after the FBI, she's going after CIA, she's going after the US government, the current US government. हमको ये भी पता है कि US में elections हैं, तो she's playing to a political gallery. She's known to be a Republican supporter. What we are hearing from people in US, right? तो कहीं ना कहीं वो political score और personal score को adjust करने के चक्कर में uh, she's trying to malign everybody left, right, and center. That is what Sarah Adams' game basically looks like. It's a very poor show from her part. एंड व्हाट मुनीब जी, व्हाट इज द बिगर गेम प्लान? अचानक से ये आकर कहना कि तालिबान को इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं। शी कैन नॉट प्रूव दैट ऑन रिकॉर्ड, अदरवाइज अब तक वो लोग प्रूव कर चुके होते। एंड देन तालिबान के बारे में बात करना, पाकिस्तान के बारे में बात करना, ये बिगर गेम प्लान क्या है जी? See, just because she cannot understand that why there are $10 million, if those $10 million are paid, we don't know if that claim is true or false, right? But let's assess, even if that, I will say 2% of that claim is true. How does she come to that conclusion without any solid evidence? So that is what I said. No, she's trying to throw a lot of mud. Where will it stick and where it will come out? What she's saying about Taliban or Pakistan relations is something, what she has said in this podcast is something which we have been saying for a very long time. Since Afghanistan में Taliban जब से power में आया है, since Afghanistan, Taliban is in power in Afghanistan, right? We have seen
the way Pakistanis were hoping that they will be able to control the Afghan Taliban, and they will have strategic depth, what Pakistan called it. Taliban is their strategic depth. It was a spectacular failure for Pakistan and Afghanistan, because once Taliban got in control in Afghanistan, they completely shunned the Pakistanis. And on the contrary, then their regional issues started coming up, starting from the Durand line. So the first problem between Afghanistan and Pakistan happened on the Durand line, when Pakistan tried fencing some of its areas, in the Khyber Pakhtunkhwa region, and the Afghanis never allowed them. And then there was, they exchanged fire. We saw a lot of conflict, a lot of clashes happening on Spin Boldak area of that region also. So Afghanistan and Taliban are going to have a problem, because what Pakistan did not realize is, look, Imran Khan was somebody who understood, not, I would not say who understood, but who tried to make the deal with TTP, right? But once Imran was gone, there was no deal with TTP. Uh, the way Pakistanis were thinking that we have a strategic depth inside Afghanistan as Taliban, the Talibanis created the strategic depth called TTP inside Pakistan, which Pakistanis never realized till that death came and took them by surprise. So now the situation is such that Pakistan doesn't have the ways and the means to launch a military operation, because that essentially means one going into KPK, into your own areas, into your own people. And they have tried it before also, it has not worked for Pakistan. They tried it during Musharraf era, it didn't work well for them. They had to pay a lot of backlash after that. Given the situation now, uh, there is a lot of support in KPK for Afghan Taliban, because culturally they align to them, religiously they align to them more than they align to the Pakistanis. So now the problem is that what does Pakistan do? The TTP is relentless. They try talking to the TTP. TTP is not ready to bend in, not ready to give up arms. TTP has, sorry, TTP has what they call jihad against Pakistan, because they want to make Pakistan an Islamic country. And that is what the goal of Taliban also was, to make Afghanistan an Islamic country, right? So their goals somewhere converge. So Pakistan is in a very difficult situation. The only game Pakistan could play was that of, uh, you know, propping up IS or ISKP against what we call ISKP, Islamic State of Khorasan province. Khorasan is a small area on the Afghanistan side, but historically, if you look at the Khorasan is supposed to be a huge area. So they started playing this, meeting terror with another terror organization, and it is not going to end well for them. One, because till now Pakistani terror resources used to come not only from these radicalized area of KPK and Afghanistan, but now since they have turned against Pakistanis are seriously outnumbered in terms of their terror organizations also. So they will have to recruit from somewhere else for them to fight the Afghans and the KPK guys, to save Pakistan from what is happening. So we have been predicting that KPK is going to fall to TTP. So what is going to happen is that KPK is not something which will become a part of Afghanistan, but there will be so much of fighting happening in that region that will be a very autonomous region. Pakistan, whatever little administrative control Pakistan has on KPK, will also be gone. So effectively, KPK will be one of the, you can say, of liberated area. You आप उसको कह लो, या आप उसको autonomous area कह लो. Autonomous तो वो वैसे भी बहुत हद तक है ही politics के हिसाब से, पाकिस्तानी politics के हिसाब से भी. But it will be a complete area which will, sort of a cut off from the Pakistan map. So that is what is happening in this region for now. They are planning to open a front on the western side of Bharat. Is it to how do we come to that conclusion? Ji. Who is opening that front? Who is planning to open that front CIA. Looks like on the CIA is western planning to side? open a front on the western side, जहाँ पे You mean Pakistan, see, Afghanistan, if you look at, China, सब emerging. look, जी. I don't know. Going by Sarah Adams, she is not a CIA agent anymore, right? I don't think she is in some official capacity sitting in CIA still, because otherwise she wouldn't be coming onto US podcasts and talking.
mudslinging left, right, and center. But if you look at the American plan, yes, the Americans will have an interest. If you remember the great game also, the kind of game they want to play in this region. See, the problem right now with the Americans is that they're stuck in the Middle East. They're stuck in Ukraine with Russia. They're stuck, with Iran in the Middle East vis-a-vis Israel and Gaza conflict, right? In Ukraine, the war is not going very, very well for them. In fact, it's going very, very bad for them. And they are losing badly there. They tried to play this game in Iraq and Syria when ISIS was there. They dismantled the ISIS on the Iraqi side completely, but then they let ISIS fight the Syrians in Syria. Subsequently, what happened was the Russians also came to the aid, and the Americans were also fighting there. So it was a slugfest happening in that region for a very long time, and they couldn't bring Assad down. Assad is still in power, and after a decade of war in Syria, they still are जिसको हम stalemate कहेंगे वहीं पर हैं अभी भी stalemate पे भी है. They tried their best to bring Assad down. It has not happened. So now what happens? You will have to, re-strategically relocate and refight and open a new front, which is going to put a lot of pressure on your adversaries. Uh, Why Pakistan? Because Pakistan, if you see, Pakistan borders Afghanistan, Pakistan or borders Iran, right? From Pakistan, the access to Central Asia and Russia is very close. We have seen ISIS attacks already taking place in Russia. The Tajiks are the ones who have been uh, the Tajiks are already been recruited for this. So the Central Asian, few Muneeb people ji, from I think. Central Asia. Can you hear me now, ma'am? Hmm. हाँ. Yeah, So I can hear you. ताजिकिस्तान का अगर जी. हाँ so ताजिकिस्तान का अगर आप देखोगे कि ताजिकिस्तान में they have already recruited a large number of people from Tajikistan, right? So what happens now is US gets they don't care a damn about Pakistan. Pakistan for US is a collateral damage. What happens in Pakistan is not going to be US headache. What they're essentially trying to do is they're enticing Pakistan to become next Afghanistan, where everybody will be fighting there for their bit of pieces. So what will happen is once the Pakistan they will support Pakistan to prop up ISIS or ISKP in particular because they want unstable Russia, they want unstable Iran because they want to ease the pressure from Middle East and come back to their on the back door. So they want to come to their home yard. So they will do that, but Pakistan is going to be a collateral damage in this war. Pakistan is going to lose KPK. There is huge chance that Pakistan can actually lose Balochistan too as well if the Chinese don't step in. Because I don't think that the Chinese realize the gravity of the situation which is coming up in Pakistan for now. And the Pakistanis just launched an operation, and that operation is a no-go from day one. Nothing is happening on that front. So the Chinese are going to be very, very apprehensive of what is happening in Pakistan. But I don't see the Chinese have a plan in Pakistan. Chinese are more dependent in today's date on the Afghan Taliban than what they are on the Pakistanis. They would rather deal with Afghan Taliban than they would deal with the Pakistan, because Pakistan has not been able to uh, you know give them what they have really wanted in this region. But on the other side, they think they have a chance of dealing with the Afghan Taliban. So you have you will have a situation where uh, since the fight is happening in KPK, since the fight is happening in Pakistan, the Chinese will be under a lot of pressure. The Afghans will be under some pressure. The Iranians will be under some pressure, and of course, India is also going to be under some pressure. So that is what is going to happen in the region. So you bog them down, all of them into a box called Pakistan, where then everybody sort of plays their own regional games and get diverted. Uh, why China? It's critical for US also to get चाइना को वहां पर घसीटने के लिए, क्योंकि अगर आप चाइना का ताइवान का प्लान देखोगे या साउथ चाइना सी का आप देखोगे, फिलीपींस पे जो एग्रेशन चल रहा है, तो यूएस नहीं चाहेगा. यूएस चाहेगा कि वो उसको खींचे वापस. तो दैट इज व्हाई चाइना इज ऑल्सो ऑन देयर रडार. ईरान भी रडार पे है, अफगानिस्तान तो है ही है. हालांकि दे सपोर्ट तालिबान, बट अफगानिस्तान में भी दे विल तालिबान को उतना वो फ्रीडम नहीं देंगे कि तालिबान जो है फिर वो एक ऐसी फोर्स बन जाए जो जिसके साथ फिर इनको
आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएँ। सो सारा एडम्स का जो अगर आप पॉडकास्ट देखोगे उसका सारा ब्लेम जो है वो तालिबान पे है, अल-कायदा पे है और कहीं न कहीं उसका व्हाइट वॉश करना ये कि नहीं जो अल-कायदा है वही आइसिस है, दैट इज़ अ वेरी, वेरी पुअर अंडरस्टैंडिंग। आई एम सरप्राइज्ड दैट सीआईए एनालिस्ट का ये बोलना कि ये दोनों सेम है इज़ वेरी पुअर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज़ वी ऑल नो दैट दे आर स्वॉन एनिमीज़। एक दूसरे के जानी दुश्मन है। हालाँकि देयर आइडियोलॉजिकल कज़िन्स बट इनका जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है रिलेटेड टू ग्लोबल खिलाफत जो इनका है या इस्लामिक रूल जो इनका है, जो इनका प्लान है। तो उस चीज़ को लेकर आई थिंक सारा एडम्स ने सिर्फ व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। दूसरा प्रॉब्लम विद अमेरिकन्स एंड वेस्टर्न चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो वेस्टर्न एजेंसीज़ हो, इनका प्रॉब्लम ये है गायत्री जी कि इनको दे लाइक टू सेट द नैरेटिव। इनको नैरेटिव सेट करना पसंद है। इनको काउंटर नैरेटिव पसंद नहीं। दे डोंट लाइक इफ दे आर काउंटर्ड ऑन देयर नैरेटिव। अभी तक अगर आप देखोगे इनको ये लगता है कि जो नैरेटिव ये सेट करेंगे वही नैरेटिव जो है लोगों लोगों तक जाएगा एंड दैट इज द नैरेटिव पीपल विल बाय। द प्रॉब्लम इज यूएस में तो यस, क्योंकि अमेरिका में जो लोग हैं ना वो दे आर नॉट वेरी अवेयर और जियोपॉलिटिकली कि किस रीजन में क्या हो रहा है। दे डोंट केयर because it's very far from their borders. But they don't realize that people who are living in this South Asia or Middle East, they follow their politics, they follow their history very, very closely, right? So that is another problem. So once you start countering them, they start getting edgy about it. And we have seen Sarah Adams tweeting, "Why are Indians saying this?" Of course, the Indians will say this because if you cannot understand the $10 million, how can Sarah Adams, as an American, uh, you know, justify $83 million per week paid to Taliban by the US government? तो फिर आप उसको कैसे इंडिया पे ब्लेम कर रहे हो और यूएस पे ब्लेम नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये कुछ सवाल हैं जो उठते हैं और जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, बट देन वेस्टर्न बीइंग वेस्टर्न, यू नो हाउ दे ऑपरेट। Right, right. So we are looking for a bigger game plan in the Western Asia, जहाँ पे आप बोल रहे हैं जैसे अभी मैंने जो मैप दिखाया था कि सीआईए का ये जो आया है, दे आर ट्राइंग टू प्रॉब्ली क्रिएट अनदर फ्रंट, क्योंकि उधर ताइवान की तरफ से वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं इधर। देयर इज अ कॉमन एरिया जहाँ पे खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सबका एक मीटिंग पॉइंट होता है और चाइना के उसी एरिया में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रखी है। जी मुनीब जी। सारा सीपेक जो है चाइना का दैट गोज थ्रू दिस रीजन, राइट? तो अगर आप देखेंगे कि सीपेक पे कितना शोर मचा है और पाकिस्तान ने 2 डिवीजन रेज की थी सीपेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट पिछले 3 साल से दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट चाइनीज इन दिस रीजन। बलोचिस्तान में हमने बहुत अटैक्स देखे हैं जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए हैं, जो पाकिस्तानी मिलिट्री पे हुए हैं। सो दिस टेल्स यू दैट इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल, नहीं कर पा रही उसको। और अब सिचुएशन वहां पर आ गई है कि जहां पर पाकिस्तान जो है वो बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन में फंस गया है। एक तरफ से द अफगानीज आर देयर, द अफगान तालिबान इज देयर, जिनके साथ उनकी हॉस्टिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो पाकिस्तान ने हार्ड स्टैंड दिखाया अफगानिस्तान की तरफ, आई डोंट थिंक पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इस चीज को they have thought through this properly. The way इन्होंने अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला, ह्यूमिलिएट करके निकाला, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की, उनका पैसा खा गए, उनको ह्यूमिलिएट किया और उनको फिर पाकिस्तान से निकाल दिया। आई थिंक दैट ऑल्सो एड्स टू द स्कार्स ऑफ अफगान्स। एंड वो हार्ड लाइन जो उन्होंने एक अप्रोच लिया था, दैट is now coming back and biting these Pakistanis badly, क्योंकि अब इनके पास कोई भी एक ऑप्शन नहीं है जिसपे ये टीटीपी के साथ या तो नेगोशिएट कर पाए। तो ओनली नेगोशिएशन अगर ये टीटीपी के साथ करते हैं वो ये होगा कि देन इनको केपीके को टीटीपी के हवाले करना पड़ेगा। दैट मीन्स दे विल बी सरेंडरिंग टू द टीटीपी एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू डू दैट। सो पाकिस्तान अब जो है दोनों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ से हॉस्टाइल अफगानिस्तान है, एक तरफ से इंडिया है। सो इसके दोनों साइड पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पाकिस्तान स्टक है। ना होगा क्या कि अब slowly the Chinese will also put a lot of pressure on Pakistan. चाइना ने ऑलरेडी इनको अल्टीमेटम दिया, आइदर स्टार्ट फुल फ्लेज्ड थिंग, फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन कीजिए आप लोग और इस चीज को बंद कीजिए, या फिर वी विल हैव टू टेक थिंग्स इन आवर कंट्रोल। दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट। सो इन्होंने चाइनीज को दिखाने के लिए तो किया, मगर वो ऑपरेशन पहले दिन से ही फेल हो गया। एक तो वो डीर में फेल हो गया
जहाँ इनकी बहुत हेवी कैजुअलिटीज हुई हैं। अच्छा, अगर अब आप केपीके को रीड करेंगे आज की डेट में, केपीके में शाम को टीटीपी की पेट्रोलिंग होती है। टीटीपी ने चेक पॉइंट्स डाले हुए हैं और टीटीपी हर गाड़ी को चेक करते हैं, नाका चेक करते हैं, नाकाबंदी की हुई है। सो ये हाल है पाकिस्तानी फौज का आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा में। सो कितनी देर तक चाइनीज भी इसको होल्ड करेंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये फाइट जो है ये पाकिस्तानी मेनलैंड क्वेटा में आती है, पेशावर में आती है, केपीके में लड़ी जाती है, बलूचिस्तान में लड़ी जाती है और ये उस लेवल पर चली जाती है जहां पर वेयर वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग की ये जाएगी, देन चाइनीज विल बी कमिटेड टू द रीजन। उनको अपने एसेट्स बचाने बहुत जरूरी हो जाएंगे। या तो चाइना ये करे कि अपना बीआरआई को बंद कर दे और भूल जाए, जो सीसीपी कर नहीं पाएगा, क्योंकि सीसीपी का सारा बेट शिपिंग का सारा जो बेट है वो बीआरआई पे है। या तो दे हैव टू फॉरगिव देयर बीआरआई, या फिर द चाइनीज विल हैव टू एंटर समवेयर इन पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाट अमेरिकans आर बेसिकली लुकिंग एट। They are looking at a trap for the Chinese to come in. That is why they're setting this region up entirely. Absolutely. Right, right. And how do you look at it? Like, what will be the response of the Indian government? क्योंकि हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे एक नया फ्रंट खुल रहा है, तो मोदी जी का क्या इस पे रिस्पॉन्स रहेगा? जी, इट विल बी अ टर्बुलेंट See, टाइम, I मुझे think ऐसा he will लगता take है. a hard approach. It is going to be turbulent times. These next 3-4 years are going to be extremely turbulent. We are already seeing कि रजौरी पुंछ में क्या हो रहा है, right? जितना प्रेशर आप देखेंगे पाकिस्तान में उनके ईस्टर्न बॉर्डर पर पड़ता है कि टीटीपी और आईएसकेपी के बीच में जितना वो वायलेंट होता है, वो प्रेशर ईज करने के लिए दे विल यूज आवर बॉर्डर्स. So it is going to be something which is going to be very difficult for us also, and we have to be very very vigilant. I think जहां तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने तो he is very clear while he is dealing with Pakistan. He is not going to sit down with them. He is not going to talk to them. He has a hardline approach and he'll maintain that hardline approach. Uh, we have seen an LOC violation happening. अभी पुंछ में हमने देखी, वहां पे पाकिस्तानियों ने फायर ओपन किया, तो काफी टाइम के बाद सीज फायर के बाद फिर से हुआ है. सो थिंग्स आर गोइंग टू गेट हीटेड अप ऑन द बॉर्डर्स, बट आई थिंक इट विल नॉट हीट अप टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे you will have to carry out a very deep intervention to stop that thing. It will be skirmishes, it will be heating up, LOC will be flared up. But जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, I think the way we are handling Pakistan, he will keep on handling Pakistan the same way. और वो पाकिस्तान को बिल्कुल एक टाइट बॉक्स में डालते जाएंगे, क्योंकि जितना पाकिस्तान में टेररिज्म और जितनी टेररिज्म फाइट होगी, उतना पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है. क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी इकोनॉमी का हाल देखेंगे इस वक्त, दे आर सोली डिपेंडेंट ऑन आईएमएफ. सो व्हाट इज पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट क्या देख रहा है अपने आप को गेन करने के लिए इधर से? उनके लिए दो चीजें उनको दिख रही हैं. एक, जो अमेरिका से डॉलर आ रहा है, राइट. दो, जो इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, चाइना उसको फंड करेगा. सो पाकिस्तान इज लुकिंग ओनली ऑन द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कि हमको पैसा कितना मिलेगा. दे आर मिसरीडिंग द ग्राउंड सिचुएशन कि अगर वंस दिस गोज आउट ऑफ हैंड, then what will Pakistan do? Because once it goes out of hand, the Chinese will come in. Once the Chinese come in, then Pakistanis are literally done in the area, right? Then they will get paid to attack Chinese, like they got paid. Taliban they used against ANDF. So or they asked ANDF to attack them. सो उल्टा करेंगे ये, तो ये अमेरिका से फिर बोलेंगे कि ठीक है, आप हमको वो डॉलर दीजिए, हम चाइना पे प्रेशर बनाते हैं. तो उस टाइप की जो गेम है हम देखने को मिलेगी. हमारे लिए भी इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट. We have to be very very cautious, because this spillover has a tendency to trigger, and we have certain soft spots in our country which they will try to exploit, and we have to be very 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 cautious politically as well as on security wise कि वो soft spots जो हैं वो कहीं conflict ना करें, कहीं हमारे लिए problems internally ना करें. Very good. Muneeb ji, would you like to add some point or towards the concluding point, towards the conclusion? My concluding point is going to be that, see, the war is coming to the backyard. And when I say the backyard, we have to be careful because it is being fought in our neighboring country, right? What we need to really focus on is our internal security at this point of time. Given the politics in our country, the way it is going, the way opposition is behaving,
I think we will have to be very, very, careful on what is happening within the country, and we have to be very, very careful on what is happening on the Bangladesh front. अ, हमको जहाँ पर जो हमारे फेयरिंग पॉइंट्स हैं, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में है, या बंगाल बॉर्डर पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, जो इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस इज द टाइम टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स, बिकॉज अगर आज की डेट में हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते हैं, जितना पाकिस्तान में केओस बढ़ेगा उतना फिर हमारे लिए भी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी. जी, बिल्कुल सही। कहते हैं ना, यू कांट चूज़ योर नेबर्स। तो अगर You can't choose नेबर्स your में neighbors, प्रॉब्लम्स है तो हमारे घर but look, it's not our problem. We two neighbors can perfectly not talk to each other for their whole life and live side by side, right? The problem is when your neighbor is trying to put his nose into your business every day. Then it is essential that you cut off his nose and say, you please mind your own business. You have no business pointing your nose into my direction, right? But राइट, look, with your relatives, with your siblings, you have to maintain a relation because at the end of the day, they're a family. But with neighbors, you have no obligation to do that. If the neighbor is misbehaving, the best is to ignore him, and that is what Modi ji has done. जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मुनीर जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूपीए स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you, ma'am. Jai Hind. थैंक यू।